Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Live the Day Conversations. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने ये वीडियो चार दफ़ा कल स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट आई वॉजेंट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. आई वॉजेंट प्रेजेंट और आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वेरी ईजीली. मेरी नींद बहुत कम हुई हुई थी और मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, तो आई डिड नॉट वांट टू डू इट इनजस्टिस. मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, नहीं हुआ. दूसरी दफ़ा ट्राई किया, नहीं हुआ. तीसरी दफ़ा ट्राई किया, फिर नहीं हुआ. चौथी दफ़ा किया, फिर जब नहीं हुआ तो आई थॉट आई शुड लेट दिस गो. सो आई लेट इट गो. ठीक है, बट आई एम here today and I want to do this topic justice. I will try my best because this is the most important topic when it comes to mental illness, especially in a place like Pakistan, because family is an institution. It's more than an institution. It's life. Family, for better or worse, जैसी मर्जी आपको फैमिली अल्लाह ताला ने दी है, it's a thing. It's a real dense institution which you have to go through in life in Pakistan. Or with mental illness, it only makes things more complicated. It doesn't make anything easier. So today's topic is about mental illness and keeping family ties. Family ties as in keeping family ties से मेरा मुराद ये है, मेरी मुराद ये है, या किस मुराद मोहम्मद मुराद ये है कि you just, how do you understand family and how do you get understood by your family. So welcome. अपनी पॉपकॉर्न ले आएँ, अपना सारा सामान ले आएँ, सारा जंक फूड ले आएँ, क्योंकि ये लंबी वीडियो होगी. और लंबी वीडियो नहीं होगी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंफॉर्मेशनल एंड इमोशनल एज पॉसिबल. लाइक इमोशनल इन द सेंस के ट्रू इमोशंस एंड ऑनेस्टी एंड द अगलीनेस. तो लेट्स बिगिन. अगेन, आज का जो टॉपिक है, दैट्स mental illness and family. How to understand family and how to get understood. That's the thing. अच्छा, सबसे पहली बात, if you are somebody who is like young like me or younger or a bit older and you're going through a mental illness, then no, याद रखें कि if you're going through it, then there's a high probability कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके दरमियान में आप बड़े हुए हैं, जिनके दरमियान में आप the people who have raised you have mental health issues too. Period. Like, you have to remember. इसमें कोई ifs and buts नहीं है. कैसे होता है, आई कैन नॉट प्रूव यू इन दिस वीडियो. ठीक है, ये कि क्यों ऐसा होता है और वाकई ऐसा होता है, या वेयर इज़ द एविडेंस एंड वेयर इज़ व्हाट. आई एम नॉट हेयर टू डू दैट. आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू दैट इफ़ यू आर, एक एविडेंस है मतलब जीन्स, जेनेटिक्स, बिकॉज जेनेटिक्स जो है वो बहुत बड़ा पार्ट होती है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस का. तो ये I can give you evidence के if you're suffering from a mental illness, then your family is too. तो genetics तो है, but हम जो हैं वो genetics कहीं लिख नहीं सकते, कहीं पढ़ नहीं सकते, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. और mental health as a mental illness as itself
इट्स एन इनविजिबल डिजीज़, इट्स नॉट विजिबल. ये नहीं कि ओए यार जा एक्सरे दिखा मुझे, क्या किधर है तुझे डिप्रेशन में, मैं दिखाता हूँ कि टांग में डिप्रेशन है मुझे एक्सरे दिखा टांग का. ये इस तरह नहीं होता कि यू कैन शो समबडी दैट हेयर लुक आई हैव डिप्रेशन बिकॉज ब्ला 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 ब्ला. इस तरह नहीं हो सकता. तो you have to remember, this is a rule of thumb, कि if you're somebody young and you're going through depression or any mental illness, then there's a high probability that your parents or your family members are going through it too. And keeping this in mind, you have to also remember that if they are going through it and they are from a different generation, then they did not have outlets like this for them, so they dealt it in a specific way जो आपसे compatible नहीं है, आपकी personality और आपके times में compatible नहीं है. So you have to remember कि they dealt it with in a completely different way. वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, but it's ages different from how you're dealing with it. ठीक है. So you have to remember, उनके टाइम पे वो हैशटैग्स और मेंटल हेल्थ मंथ्स और ये इंस्टाग्राम और ये सब कुछ नहीं था. दे डिड नॉट हैव दिस. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फर्स्ट टू थिंग्स. ये जो वीडियो होगी ये पॉइंटर्स हैं सारे, ये मैंने सारे पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, रिमाइंडर्स हैं when it comes to family and mental illness. So this first pointer is about knowing and understanding and recognizing that if you're somebody who's going through mental illness, then there's a high probability that the environment you're in has mental illness embedded into it. Like कई लोगों में या कई setting में, architecture में, कई हवा में कुछ वो mental health issues और illnesses फैली हुई हैं. ठीक है. So you have to remember this first pointer. और जैसे हमने बात की कि जीन्स एंड जेनेटिक्स इज़ वन ऑफ द एविडेंस जो आप कह सकते हैं कि ठीक है अगर आई हैव मेंटल इलनेस देन क्योंकि जेनेटिक्स काफ़ी बड़ा पार्ट होती है तो उसकी वजह से हुआ है. एक और चीज़ है इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट जो है वो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम कहीं लिख नहीं सकते. इट्स नॉट टेंजिबल. इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग अराउंड यू. तो इन्वायरमेंट, इफ़ imagine if your family or parents had been suffering from mental illness, तो उनके इर्द गिर्द जो environment थी वो उसी से related थी. और जब आप आए दुनिया में तो आप उसी environment में आए और उसी environment में बड़े हुए. तो this is not just one generation and one human being thing, it's a generational thing. अगर आप के साथ mental illness, mental health issues हैं तो आपकी पूरी environment, आपकी पूरी history और future जो है उसके अंदर mental health issues जो है embed हुए हैं. तो you have to remember this कि everything around you, the immediate environment has mental health issues embedded into them. ठीक है. Second चीज़, if you're somebody who has been facing mental health issues and who's been suffering from mental illness, and if you're somebody who hasn't shared with your parents or family, then please remember that whenever you decide, ये हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, but again क्योंकि ये family specific बात है तो I'll do it again, कि if you do manage to share your illness, you cannot expect your parents and your family to understand you right away. You cannot. Why? Because number one, you have never shared your disease with them before, and you have never talked about it. You have always hidden it. You have always locked it inside your heart. So now that you're coming out with it, you cannot expect them to understand all of your history and all of your ups and downs and intricate details like that. मतलब एक ही सेकंड में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनको कि आपकी सारी स्टोरी पता लग जाए. दे आर ह्यूमन बींग्स टू, जस्ट लाइक यू. जस्ट लाइक आपने गलती की बाय होल्डिंग इट इन,
और वो आपकी शॉर्ट कमिंग थी, तो उनकी भी शॉर्ट कमिंग हो सकती है कि वो आपकी बात एकदम से समझ ना पाएँ. इट्स नॉट देयर फॉल्ट, it's nobody's fault, it's just the way it is. So you cannot expect, ये word जो है ना expect, you cannot expect from them कि वो आपकी कोई भी बात जब आप when you finally come out after 20 years or 30 years and talk to them and share with them, you cannot expect कि वो आपको राइट रिस्पॉन्स या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे. यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर रोल इन योर लाइफ इज़ टू सपोर्ट यू no matter what. It's not to understand you completely, because you're a complete human being, and if you've been hiding that human being all this time inside yourself, then they're not mind readers, they're just human beings like me and you and everybody else, imperfect human beings. So you cannot expect कि जब आप उनसे शेयर करो तो आपको राइट रिस्पॉन्स मिले या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिले. दे विल रिस्पॉन्ड विद वॉट एवर दे हैव नॉलेज अबाउट. जिस तरह हमने पहले बात की कि जनरेशनल गैप है, योर फैमिली डेल्ट विद देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज डिफरेंटली. कुछ भी हो सकता है, खामोश रह के, नमाज पढ़ के, कुछ भी हो सकता है. मतलब I don't know कि क्या है, because I wasn't there. तो you have to remember that you cannot expect कि आप करके सारी अपना अंदर जो भड़ास है और जो मसले हैं वो बाहर निकालें और वो हैप्पीली एम्ब्रेस करें कि ओ ऑफ कोर्स ऐसे ही होना था, तो लेट्स जस्ट कम इन हग एंड एवरीथिंग्स ऑल राइट. ऐसे नहीं होगा. ये मूवीज़ में ऐसे होता है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट था कि यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस, देन योर फैमिली, there is a high probability that your family is going through it too, and not just your parents but your siblings too, because they were raised in the same environment as you were. Okay, so you have to remember, yes, you have to remember कि आपके siblings भी जो है ना, और siblings भी, it doesn't matter कि आप अगर आप किसी तरह शेयर कर रहे हो चीज़ें, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर योर सिबलिंग्स टू शेयर द इलनेस द सेम वे, बिकॉज दे हैव different roles in your family, in life, in society and everything. They will express it differently. ठीक है. You cannot expect them to share or to express their concerns the same way you do. You have to remember that. So family has illness too if you do, and siblings included. ठीक है. So if you're depressed, then your siblings must be going through the same stuff. Confirm. अच्छा, तो दूसरी बात ये थी कि you have to let go of your unrealistic expectations when coming out with your illness and sharing and everything, because everybody is human around you and nobody is perfect, and it's not your parents' job to understand you 100%, because it's not their job. Their job is to support you no matter what and do whatever they can, and they'll do whatever they think is right. So you have to remember this. Third point, if you're suffering from a mental illness and you're not able to share it, then you have to recognize why. Okay, you have to ask yourself, why am I not sharing? There could be two things in my head. The first thing is burdening. ठीक है. you must think यार मैं क्यों बर्डन करूँ अपने पेरेंट्स को, पहले ही उनके इतने मसले हैं और मैं और बर्डन कर दूंगा, उनका तो कचूमर निकल आएगा. For that, I'd share my story. I will share my story, which is कि when I shared, I thought, मैं इस पर्सपेक्टिव के अंदर बैठा था जिससे मुझे ये शेयर करना और ये बताना जो था, it seemed like the biggest gift I could ever give my parents. Why? It sounds really ridiculous, but I will tell you. मैंने सोचा था, और ये मैंने सोचा नहीं था, ये दिमाग में बात आ गई थी जिसकी वजह से ये जैसी बात आई थी, that
this thing made me able enough to share my pain with my parents. और मैंने सोचा था कि यार अगर मैं पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा जो है वो उसके पास दो चॉइसेस हों कि या तो वो मुझे अपनी मेंटल इलनेस का बता के मुझे बर्डन कर दे, या सेकंड वो मुझे इस काबिल समझे कि वो मेरे पास आए, बैठे, मेरे साथ रोए और मुझे बताए कि अबू अम्मी आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आई नीड हेल्प, व्हाट विल आई प्रेफर? एंड स्ट्रेट अवे, common sense, reality, I chose the second path. Ke if I tell them this and if I talk about suicide with them, they will think कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ ठीक ऐसा किया होगा as a parent कि आज मेरा बच्चा जो है he is being able to come, sit, cry his heart out and talk to me about suicide. मैंने कुछ ऐसा किया होगा अच्छा ज़रूर कि एज अ पेरेंट कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए और यू नो ऑल दैट. सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द बर्डनिंग थिंग, think about this for a second, please. Think about the gift you can give them. I think that's the best gift you can ever give a parent. The sense of worthiness, like validation of being a good parent. And I don't know, think about it. और दूसरा ये हो सकता है कि आप ये सोचें कि they won't understand, so there's no need to share with them. ये बात वही expectations पे आ जाती है. They are not supposed to understand. ठीक है, आपने पूरी ज़िंदगी वो जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी थी वो छुपा के रखी है, तो अगर अब आके आप 2 घंटों में उनको सारा कुछ बता दें तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो पूरे 25-26 साल 20 साल की हिस्ट्री आपकी एकदम से यूँ समझ जाएं. ऐसा नहीं हो सकता. दे ओनली ह्यूमंस, दे अंडरस्टैंड, they'll only understand the information they're given. अगर आप उनको बिठा के 2 घंटे तो नहीं 24 घंटे बिठा के अपनी पिछली 20 साल की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मोमेंट जो आपने गुजारी है वो उनको बता दें और सिखा दें और मेमोराइज करवा दें और फिर आप उनसे वो एक्सपेक्ट करें, तो दैट मेक्स सेंस. बट इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, विच यू कैन नॉट डू, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट the right response, the right understanding. You can only expect support, and you cannot even expect the right response because they do not understand the illness like we people do. They do not, unless they're fully educated about the illness. You cannot expect the right response or the right support. ठीक है, तो वो आपकी नज़रें उतारेंगी, वो आपको कहेंगे नमाज पे गिर जाओ, मर जाओ, बस रो उसके ऊपर, सही तरह नमाज पढ़ो, ये करो, वो एक्सरसाइज, ये वो, लेकिन असल में जो मसला होगा और जो आंसर होगा दैट विल बी मतलब थेरेपी और मेडिकेशन. बट यू कैन नॉट अगेन एक्सपेक्ट द राइट सपोर्ट. यू कैन ओनली एक्सपेक्ट सपोर्ट. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग that support and as long as your parents are giving you that support, you have the best parents and that's it, full stop. अच्छा, now keeping this in mind, ये जो पहली हमने 3 बातें की, keeping those 3 points in mind, the environment you grew up in, it did not equip you with the tools you need to make it through your situation. ठीक है, because your environment was stressful, your environment was extremely stressful and extremely sad and extremely oppressed and suppressed and all that. So
कॉन्सिक्वेंशली आपकी जो यू वर नॉट इक्विप्ड टू डील विद दिस सिचुएशन. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. So you cannot deal with this situation like a normal human being would do, because जिस environment में आप बड़े हुए हैं वो इस तरह की environment नहीं थी. और आपने देखा कि लोग जो हैं वो इर्द गिर्द सफ़र कर रहे हैं आपके, लेकिन they are staying quiet. And आपने देखा कि they are not expressing their feelings the right way. They are expressing it with anger and with silence and with all that. So you will be silent too, and you will be miserable too. And unlike their times, unlike your parents' times, we have different, not more challenges, but we have different challenges, everyday challenges. और हमारे लिए वो जो situation है, वो जो treatment के तरीके हैं, वो काम नहीं कर सकते. ठीक है. We cannot stay silent and deal with this thing every day, every single day. We can only come up with new things, and वो क्या है वो मैं आपसे discuss करूँगा. But you have to remember that आपकी environment ने आपको well enough equipped नहीं किया to deal with these issues, because what you've learned, what you've internalized are only the things what your parents and your environment taught you to do. तो आपकी environment में पिछले times में silence and patience and sabr, all these things were the way to go, because they had no other choice. They did not have these kinds of outlets and these kinds of talks and this kind of awareness at their time. So they had different ways to go on. So you have to do something different. You have to do something which your parents and your environment did not equip you to do. Sorry. So first 4 points क्या है? First point था to know that if you're suffering from a mental illness, then your parents or your family is suffering from it too. Second, if you're suffering and you haven't been able to if you're suffering and you haven't shared your illness with anybody, then lower your expectations or manage your expectations before doing that. And third point ये था कि if you're suffering and you are about to if there's something which is holding you back from sharing, तो हमने दो बातें डिस्कस की थी कि पहली बात ये हो सकती है अगर बर्डनिंग है तो उस तरह ना सोचें, इट्स अ गिफ्ट, शेयरिंग इज़ अ गिफ्ट. एंड सेकंड बात ये थी कि अंडरस्टैंडिंग, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फुल अंडरस्टैंडिंग, यू कैन ओनली एक्सपेक्ट सपोर्ट. ठीक है. और फिर आखिरी बात ये थी कि कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, आपकी जो इन्वायरमेंट है इट हैज़ नॉट इक्विप्ड यू वेल इनफ टू deal with this situation. So you have to learn new ways, not use the ways which have been used by your parents or जो वो suggest करेंगे. Of course you can give them a try, but they won't work because challenges of today are completely different. So you have to remember this. Okay. अच्छा, अब okay, अब हम ऐसे मरले पे पहुँचे हैं प्रोग्राम के जिसमें मैं आपको इमोशनली पकड़ना चाहता हूँ. ठीक है. वाई? बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. और हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं अबाउट आवर फैमिलीज़ एंड अबाउट देयर वर्थ, एंड वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. मतलब इतनी आराम से वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि हमें कुछ Lord Saad 555, I'm glad you joined, but you said आपने उस दिन कहा था कि you need help. I messaged you but you did not message me back, so go check your messages. Okay, I'm very angry at you. अच्छा, तो क्या कहने लगा था? हाँ, हम इतनी आराम से फैमिली को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मतलब
कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना चाहिए, और मैं कहूँगा कि when just only when they're gone from your life, even only when you lose them, तब हमें एहसास होता है कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे. And remember, please remember, you can get 2 friends, you can get 2 cousins, you can get 2 of everything, ठीक है, but you cannot get 2 of the same sibling you have right now. You cannot get 2 of your ammis, and you cannot get 2 of your abus. You cannot get 2 of your family, period. ठीक है, you have to remember this, कि आपके जो आपकी फैमिली है, don't wait for yourself to like wake up, or don't wait for them to leave you to make you understand ke yaar how important they are. And I'm talking about if you have parents. I know so many people who have lost their parents and their siblings. Remember, your parents can go anytime, like anytime. हम भी किसी भी कोई टाइम नहीं है फिक्स्ड. यू कैन नेवर एवर नो कि आपके पेरेंट्स कब आपको छोड़ के चले जाएंगे. एंड योर सिबलिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर कि वाइल दे आर हेयर, you have to take care of them. I am not saying that they have to take care of you. No. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आपने ये बात सुनी है, उन्होंने नहीं सुनी. So you have to take care of them, because you now know that I have to take care of them, because I've told you that. And you know why? Because आपकी फैमिली सिर्फ एक है. Like your blood is running only inside a few people. Or I'm telling you, if you don't make peace with them now, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो चले गए, you will regret it the rest of your life. Like there's no coming back. There's no like second chances with family. There's no. You cannot wait to make peace with your family. इस मामले में you do not have the choice. So you have to make peace in this life, and you have to do it as soon as possible. And with your siblings too. I know a person who lost his sibling. It happens all the time. ठीक है, you have to, अगर you are a sister and you are not taking care of your brother, then please know that you are doing the worst thing anybody can ever do. If you're hurting that person because of yourself, then you are doing the worst thing ever. You have to make peace. You have to say sorry. You have to make things up. If you are a brother and you're not doing good to your sister or another brother or whatever, you have to make peace right now, because you don't know कि कल को वो किधर होगा, कैसे मतलब होगा कि भी नहीं होगा. You have to remember that everybody goes, everybody leaves. Remember, everybody leaves, and they have to. Your parents, your siblings, your family, everybody has to leave. So please make peace now, or else you will regret it for the rest of your life. ठीक है? That's how important your family is. And I don't care कि आपके family members जो हैं, they're making you feel this or abuse or blah blah blah. There are always ways
to make things better. Communication कैसे होती है हम बात करेंगे, but there's always a way. And the first thing to do is to forgive them. You have to forgive them. Remember, जिस सिचुएशन में आप बड़े हुए हैं, आपके सिबलिंग्स और फैमिली भी उसी सिचुएशन में बड़ी हुई है, उसी सिचुएशन में ग्रो की है. तो इट्स नॉट जस्ट यू हु फेस दिस सिचुएशन, एवरीबडी फेस दिस सिचुएशन. ठीक है, एवरीबडी हैज़ रिग्रेट्स, एवरीबडी इज़ ब्रोकन, एवरीबडी इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स. बेशक वो अगर वो बताते नहीं है, दैट डजंट मीन, बेशक आप पूछो भी और वो नहीं बताते, दैट डजंट मीन कि वो फाइट नहीं करे. दैट ओनली मीन्स यू डू नॉट हैव द राइट कनेक्शन एंड द राइट बॉन्ड. ठीक है, यू have not developed that bond, you have not invested the energy to develop that bond कि वो आपसे share कर सके. So first things first, you have to forgive your parents and your siblings for doing whatever they did. It doesn't matter anymore, it doesn't, because tomorrow they'll go and आप सोच रहे होगे काश मैं उनसे बात कर लेता, it wasn't a big deal. And it's not. Nothing is bigger than your family. Nothing. Like absolutely nothing. So make peace with your family, and you have to start with forgiveness. You have to forgive. सबसे पहले just forgive. अगर आपके कोई sibling है या parent है who did you wrong, you have to start with forgiveness. You have to say that I need to forgive that person and make it right with that person, and make things right with that person, and work towards developing that bond. So forgive. अगर आप forgive नहीं करेंगे तो all that anger and that frustration and that जो आग है अंदर, that will never let you grow and move on with life. It won't. आपकी वो चीज़ें सारी work life में आएंगी, professional life, friendships, हर चीज़ वो insecurities बन के हर जगह हो जाएंगी. So please, you have to, सबसे आसान और अच्छा तरीका, आसान नहीं, सबसे जो effective तरीका होता है to move on and to move on to a better place is by forgiving. Just forgive everybody. अगर आपसे नहीं होता तो pray to Allah कि अल्लाह से दुआ मांगे कि ए अल्लाह please give me the strength to forgive blank. So you have to start by forgiveness. ठीक है, family, दो आपको, you will not get two of your family members, एक ही family member, two. You can get two friends, you can get two anything, but you cannot get two of the same brother, sister, father, mother. No. And remember again, empathy is so important. Empathy, I've shared this before. Hurt people hurt. ठीक है? If your sibling or your parent or anybody in your family is hurting you, then remember that they are hurt too. Only hurt people hurt. People who are not hurt do not hurt. They move on to doing different things and good things. But the people who are hurt and crushed and bullied and suppressed and not loved and not cared for, those are the people who hurt other people. So you have to remember, you have to use the empathy formula for your family and your including your siblings and including your parents too. दोनों को include करें. Because including traumas, if your family has faced a loss, it's not just you who faced the loss, and you cannot ever say that it was
a bigger loss for you when comparing to blah blah. No, you cannot compare losses. Everybody faced that loss or trauma or whatever that was. So you have to remember that you did not go through that trauma alone. Your parents went through it, your siblings went through it, everybody went through it. और क्योंकि सबके roles and responsibility in life different होती है, तो everybody is going to react differently. Everybody is going to like process feelings differently. Everybody is not like you. Everybody is different. So everybody is going to express differently. कोई चुप रहेगा, कोई बोलेगा, कुछ करेगा. But remember that everybody is hurt. Everybody went through it. Everybody faced the same challenges as you, as a family. So you have to remember empathy, empathize. It's not just you in the family. Everybody is in your family. Everybody is going through the same things, or even worse maybe. So you have to empathize with your family and your. हम बहुत easily for granted और भूल जाते हैं कि यार हमारे जो siblings हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो ठीक ही होंगे, वो तो हैं ही ऐसे, वो तो इसी तरह सोचते हैं, वो जब टेंशन में होते हैं ना तो वो ये कर लेते हैं, वो जब टेंशन में होते हैं वो ये कर लेते हैं. नो, दैट डजंट हैपन. वो अगर आपको लगता है ना कि वो ठीक हैं क्योंकि लगता है कि वो ठीक हैं, नो, दे आर क्राइंग समवेयर एल्स. दे आर pouring out that negative energy in some other way. You don't know कि वो क्या हो रहा है. जिस तरह आप अपने आप को लॉक करके बैठे और आपने छुपाई है ना अपनी पूरी ज़िंदगी वो डिजीज़ और इलनेस और रोना धोना और सारी परेशानियाँ, they can do it too. Like, why not? तो अगर आप इतने जीनियस हैं तो वो भी तो जीनियस हो सकते हैं. So you have to remember कि everybody is going through troubles in life because life is tough. ठीक है. Now, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो you are people who now know all of this. ठीक है, जो मैंने बातें की. और अगर आपको ये सारी बातें पता लग गई हैं तो you have to know one thing more कि you cannot. अगर आप अपनी फैमिली में सबसे पावरलेस भी है ना, सबसे नीचे हैं पावर हायरार्की में, you cannot wait for others. You cannot wait for others to solve family issues. You now know के situation क्या है. You now know how to empathize. You now know how to manage expectations because I just told you that. ठीक है, तो मैंने अब आप लोगों को बता दिए and you know, and I know that I don't know what your family situation is. I know, I understand it. Everybody's family situation is going to be different और सबके power dynamics different होंगे, blah 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 blah. But the point is कि you cannot wait for others to solve the family issues because family issues are your issues because you are part of that family. So if you can, ठीक है, if you can, then please take the initiative. Start developing communications. Start developing happy bonds. Start developing healthy communication. Start developing smiles and events and moments. Start take it like आप वो करें. क्यों नहीं? Why not? Because आपको उतनी importance नहीं मिलती family में. I don't agree. That's a weak argument. ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि आपको इतनी importance नहीं मिलती. You can do so many things by yourself. Little things. I'm not saying कि आप बस जाके वो उस तरह जिस तरह फिल्मों में होता है कि फैमिली रियूनियन तैयार करें और फिर सारे जाएं, या फिर कहीं आप एक ट्रिप पे चले जाएं जहाँ पे फैमिली जो है वो सारी पहले टूटी फूटी होती है, फिर ट्रिप पे चैलेंजेस फेस करती है, फिर मिल के काम करती है और फिर सारी ये इस तरह नहीं. ये करने को नहीं मैं कह रहा क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों में होता है. ठीक है,
बिकॉज दे वॉन्ट टू सेल यू दैट फैंटेसी एंड यू बाय इनटू इट, और फिर आप बैठे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ओ अब वो पॉइंट आ रहा है जो फिल्म में हुआ था, तो अब मैं जाऊंगा और इस तरह होगा और उस तरह होगा, उस तरह होगा, और सारा कुछ फिट हो जाएगा, और फिर एक म्यूज़िक पीछे लगेगा और सारे हग करेंगे और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर होगा. इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होता नॉर्मल इंसानों के साथ और नॉर्मल रियलिटी में. ठीक है, सो यू कैन बी दैट पर्सन. यू, yes, I'm talking to you. I'm talking to you. You can be that person. You can do it. I believe in you. You can do it. Yes, you. No. Yes, you. You. Take that chance. Do it. Because you can. ठीक है? Because it's possible. Little things. Little things. Just start with little things. इफ़ यू नो कि आपने अपने बहन भाई के साथ या अपनी फैमिली के साथ ज़्यादती की है, से सॉरी. लाइक दिस नथिंग डिफ़िकल्ट अबाउट दैट. हाँ, मुंह पे तो सॉरी नहीं बोल सकते, आई नो, मुंह पे नहीं बोल सकते. टेक्स्ट सबसे आसान काम. अपनी भाई बहन अपने पेरेंट को टेक्स्ट करें. ठीक है, उनको कहें कि आई could not say it to your face, but I know that I did this wrong, so I'm sorry. हाँ, awkward होगा, ठीक है, awkward होगा, लेकिन अगर आपका argument ये और ना करने का बहाना ये है कि awkward होगा, no, awkwardness से नहीं डरना प्लीज़. डर के आगे जीत है. सलमान खान कहते हैं डर के आगे जीत है. आई हेट सलमान खान बिकॉज वो हर वक्त जय हिंद जय हिंद जय हिंद कर रहा होता है, और मोदी बहुत बुरा है, और मोदी 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 आंखें बंद करके. आई डोंट लाइक सलमान खान, बट उसने एक बार ठीक किया, ठीक है, कि डर के आगे जीत है. तो आप टेक द इनिशिएटिव, स्टार्ट विद फॉरगिवनेस. सबसे पहला काम फॉरगिवनेस, एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बिकॉज देयर इज़ नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. ये हो ही नहीं सकता कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही सही निभाई हो और सब कुछ परफेक्टली किया होगा. ऐसा नहीं हो सकता. तो फॉरगिव एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस, द फर्स्ट स्टेप. लोग पूछेंगे ना कि यार हाँ ये तुम बातें तो सही कर रहे हो, लेकिन करना कैसे? जस्ट फॉरगिव एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस. सलमान खान, नो, आई डोंट लाइक सलमान खान. अच्छा, so somebody has to start, and it can be you. Make the effort. Little things, forgive, and then ask for forgiveness. And I am telling you that it is going to get better. और अगर मैंने ये पहले भी बात की है कि if there's somebody in your family जो कि has more power naturally, ठीक है, क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि ये blah blah blah, or they have been suppressing you and oppressing you, तो remember कि उनके अंदर क्या चल रहा है, you don't know, okay? और हर कोई, जिस तरह पहले बात की, हर कोई एक्सप्रेस डिफरेंटली करता है. तो most of the people who control others, they do not have control over their own lives. So और वो जो chaos और वो जो गंद होता है दिमाग में, they let it all out by controlling others. So everybody needs an outlet. उनका outlet जो है वो आप हैं. You have to empathize. You have to know कि यार हमारी जो power dynamics है, it's the easiest way for that person to control me and to, you know, boss me around. Or you have to empathize with them. And then सबसे आसान, जिसको जो चाहिए होता है ना उसको वो दिया करें. सिर्फ उन सिचुएशंस में नहीं जब ज़रूरी होता है, बट इफ़ देयर somebody who's controlling you, bossing you around, give them the satisfaction. उनको आप होने दें, ठीक है. आप अपने आप को नीचे गिरा दें बेशक. आप अगर इस चीज़ से उनको खुशी होती है, आपके ईगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी इज़्ज़त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. यू नो कि उस बंदे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है ये करके, तो करने दें. And remember that there is like crap inside that person जो कि years of stuffiness और bullying और
नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल लाइफ और बहुत कुछ बहुत कुछ वो फंसा हुआ है और इस तरह निकल रहा है. यू हैव टू रिमेंबर. ओके. Okay. I just want to end this episode by sharing what my brother did in our family, because he was the one who started the communication. And how he started it? By yelling and fighting. जो मैंने पहले बात की थी ना कि अनकंफर्टेबल और डर के आगे जीत है एंड ऑकवर्डनेस से डरना नहीं है. आवर फैमिली इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है. डर के आगे ऐसी जीत थी कि आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आवर फैमिली ओज टू भाई फॉर नॉट holding back and for fighting, because he fought, he talked, yes, अम्मी सही कह रही हैं. मेरी अम्मी भी वीडियोस देखती हैं. सो यू कैन इमेजिन कि मेरे लिए ये सारी बातें करना कितना मुश्किल होती हैं, बिकॉज आई सी हर राइट देयर. और खैर, I will not get into it because it's really difficult. Khair, my brother fought through it. वो चीखा, वो लड़ा, वो घर से भी निकला, वो अवॉइड भी किया उसने घर, वो हर अपॉर्चुनिटी पे वो लड़ता था और हर अपॉर्चुनिटी पे वो रोता था और चीखता था. और वो उसने वो किया और वो रुका नहीं. और कम्युनिकेशन चलती रही. बेशक जैसी मर्जी कम्युनिकेशन थी, लेकिन कम्युनिकेशन थी और वो चलती रही. लड़ते रहे. साल कितने साल गुजरे, कितने साल गुजरे इस तरह. बट दैट कम्युनिकेशन नेवर डाइड. ठीक है. बहुत रोने धोने हुए. इतना रोए. अभी भी कभी रोते हैं. बहुत रोए हम. बट बिकॉज ऑफ दैट वी डेवलप्ड अ रिलेशनशिप अनलाइक अदर्स. और हम राइट नाउ लुक, मेरी अम्मी देख रही हैं और मैं उनके सामने आई एम बीइंग एबल टू टॉक अबाउट दिस. वी आर एट दैट लेवल हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं. ऑल बिकॉज ऑफ भाई and his never-ending effort to talk about stuff and share that anger and share that rona dhona and pain and all that. He kept doing it and we kept crying, but today all that led to the most amazing relationships in the world. I am shy now, but in my heart and in everybody's heart, we all have each other's confidence and we all know each other aise. So it is going to take time, it is going to take tears, it's going to take pata nahi kya kuch hoga, lekin I promise you, I promise you that if you make the effort with the right intentions, बहुत अच्छा आउटकम होगा. आई प्रॉमिस यू. मेरा बात है. सो इन द एंड प्लीज फैमिली, आप जिसके साथ भी ज्यादती करें, यू नो that you are using your power for bad. You have to stop it. You have to let people around you live. You have to let them live their own lives. You are not doing good. You have to make peace with them. Say sorry. Forgive yourself for doing it and then say sorry.
बेशक आप बड़े हैं, छोटे हैं, टेढ़े हैं, उल्टे हैं, जैसे भी हैं, forgive yourself, forgive everybody, forgive everybody, everybody. ठीक है, forgive, 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 forgive. अगर आप किसी को ब्लेम करके बैठे हुए हैं ना और आपने अभी तक forgive नहीं किया, तो you will live under that shadow forever. Not forever, till the time you forget that person, like अंदर से. So सबसे पहली बात, forgive everybody around you. Second, say sorry. Say sorry to your family and start from forgiveness. Like, just start from forgiveness. Your family, आपको नहीं पता कि कब वो चले जाएंगे, आपको नहीं पता. You just don't know. और देखना, if you don't forgive and if they go, if they leave, then remember that you will face the regret, which is heavier than anything you'll ever know. So forgive and ask for forgiveness. And with mental illness, remember that if you're suffering from a mental illness, there's a high probability, we talked about this in the beginning, that there's a high probability that your family has been going through mental health issues as well. ठीक है, high probability. Genetics and environment are the two biggest causes of mental illness. तो environment, आपकी family है ही environment, और genetics भी again आपकी family है ही genetics. So you have to do something about this, and you have to start, and the easiest thing is to forgive them and then ask for forgiveness and start over and be kind to each other. I am so glad कि मैंने कल एपिसोड नहीं की और मैंने आज का वेट किया, because I loved this episode and I'm happy. I'm so happy that I get to do this, and that people will listen to this, and alhamdulillah bas. Anyways, I hope आप लोगों के questions नहीं होंगे. नहीं अगर कोई questions हैं तो अब message करें मुझे और हम will discuss it. Or thank you for everything. Thank you for all the duas I get. Thank you for all the support I get, and I get that a lot. और YouTube channel है, उसमें it's growing, and I'm so happy that it's growing. And tell people about it. Share it with people, and subscribe. And thank you for watching. सुबह अगर कोई भी मसला हुआ, ठीक है, यू नो व्हाट टू डू. आपने अपने आप को कहना, रिजवान नहीं, आपका जो नाम है, इंसर्ट नेम, जस्ट लिव द डे, जस्ट लिव दिस डे, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. बहुत सारी दुआएं आपके लिए. अल्लाह आपको खुश रखे. अल्लाह हाफिज़. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.